Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So my name is Sandhya and I'm your computer mentor. So from today onwards, I'm going to teach you your computer subject from chapter number 1. So let's get started. So chapter number 1 is creating a web page in HTML. Okay, so let's see the learning in this chapter: introduction to HTML, viewing HTML document, HTML editor, viewing source code, HTML document structure, body tag, HTML tags, paragraph tag, that is p tag, basic HTML tags, break tag, br tag, creating HTML document. So let's see. We know that a computer on the internet stores websites, which is called a server. The computers on the internet access the information on the web pages from the server. The web pages on the internet contain text, graphic images, videos, animation, and hyperlink. A collection of web pages makes a website, and these websites are written in a language called HTML. So now let's see introduction to HTML. So HTML, that is called Hypertext Markup Language, is a language used for designing web pages. It provides certain markup codes that describe the content and format of the web page. Now, hypertext is the text that works as a hyperlink. Markup is a way of writing document that describes the general structure of the document so that the browser, it can be any type of browser, for example, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox and Apple and Safari can read the documents and display them. It does not display the HTML tags, but uses them to determine how to display the document. So here, just remember that HTML is not any programming language. Okay. Remember, there is a major difference between a programming language and a markup language. So hypertext markup language, HTML is a markup language which basically use to structure the web page. Okay, जो आपका HTML है बच्चों, ये web pages को डिजाइन करने में यानी उसके स्ट्रक्चर को रेडी करने में यूज किया जाता है. आप जो भी टेक्स्ट देख रहे होते हो या लिंक्स देख रहे होते हो, वो सारे किसके थ्रू मतलब डिस्क्राइब किए होते हैं, वो सारे ही स्ट्रक्चर किए होते हैं HTML लैंग्वेज के थ्रू. नाउ जो बच्चों आपका HTML फाइल होता है, HTML फाइल को आप टाइप कर सकते हो नोटपैड में एंड सेव करने के बाद आप उसे किसी भी ब्राउजर में ओपन करके इजीली देख सकते हो. नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ HTML. HTML documents are simple text files. HTML documents can be viewed in any browser and in type of operating system. This is why they are platform independent language. So basically just remember it, HTML आपका platform independent language है. HTML documents can be viewed in any text editor like a notepad or a wordpad, as I told you. Okay, HTML is not a case sensitive language. Suppose you are typing small a and you are typing capital A, so there is not a major difference between both of them, okay, in case of HTML. So spaces and tab can be used anywhere, unlike some other programming languages. There is no need of compilation of HTML codes. So HTML codes को compile करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती. Now let's talk about HTML editor. So there are two kinds of HTML editor, WYSI, WYG, that is what you see is what you get editor, and text editor. So what you see is what you get editors are GUI based programs that let us create web pages without knowing the HTML code. Websites can be created quickly using these editors. What you see is what you get stands for what you see is what you get. I was already saying the full form of this word. Okay, so example, that is front page, Adobe Dreamweaver, the example of WYSI, WYG. So I hope you have understood what is it. So basically ये हमें help करते हैं हमारी web pages को create करने में without having the prior knowledge of HTML code. Now let's see the text editors. Okay, so text editor are programs that are used to create web page by writing the HTML code. We need to know the correct usage of tags. Okay. Now example में आपके जैसे देख सकते हैं Notepad and WordPad. So now let's see the structure of the HTML code, HTML document structure. So the basic structure of the HTML page is HTML tag indicates that this web page is written in HTML. ठीक है, जो ये HTML tag है. Head tag contains information about the web page. For example, title हो गया, ठीक है, वो किस बारे में है. Meta tag जो SEO में help करता है, जो कि आप upcoming classes में सीखेंगे. Title tag contains the web page title which comes in the head tag.
बॉडी टैग कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, जो कि आप वेब पेज पे देखते हो। यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर समझना चाहें तो स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। दैट इज HTML tag, opening and closing tag, head tag, opening and closing, and inside the head tag आप क्या करते हो, टाइटल टैग को डिफाइन करते हो, और बॉडी टैग के अंदर आपका कंटेंट ऑफ द पेज आ जाता है, ठीक है। नाउ डिड यू नो द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंडिंग टैग इज दैट इन द एंड टैग। सो डिफरेंस क्या है बच्चों, keyword is preceded by the forward slash. Here you can see the difference between. Okay, now let's move forward and let's see the HTML tags. So HTML tags are the special keywords enclosed between the angle brackets and that convey a meaning to the web browser about how to display the content followed by them. So most of the tags are used in pairs, that is, with each starting tag there is an ending tag. Okay, for example, HTML opening tag and ending tag, title opening tag and ending tag, head opening tag and ending tag, body opening tag and ending tag. So these type of having a starting and as well as ending tag are called container tags or also non-empty tags. Okay, so there are some tags which do not need the ending tag, that they are called self-closing tags. Okay, and these kind of tags are called empty tags. Okay, so बच्चों आपने जब ये टैग्स देखे उसमें जो आपका टैग है जिसमें आपको स्टार्टिंग के साथ एज वेल एज आपको क्लोज भी करना पड़ रहा है उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं, और जिसमें आपको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, दीज आर कॉल्ड empty tags. Now let's understood attributes. Okay, tag attributes. So tag attributes are the special words used inside the opening tag to control the tag's behavior. There could be more than one attribute for a tag separated by space in between. So basically बच्चों जो आप attribute है, attribute is called special information. Special, here you can see these are special words where आप कह सकते हो ये स्पेशल वर्ड्स है जिसे हम कहाँ यूज करते हैं, ओपनिंग टैग में यूज करते हैं. हियर यू कैन सी attribute, attribute value, attribute value. So it is a special kind of information. Okay, special properties, for example, size is a property, color is the property which we define in the opening tag of the tags. Okay, HTML tags. So now which character is used to indicate an ending tag? So obviously here you can see this one. Okay, so now move forward and let's see the nested tags. When we use tags within some other tags, that इट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग्स. एक टैग के अंदर जब आप दूसरा टैग यूज कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग्स, एंड वी मस्ट बैलेंस ईच पेयर ऑफ नेस्टिंग टैग सो दैट दे डू नॉट ओवरलैप. फॉर एग्जांपल ए टैग लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर आपने बी टैग लिया एंड देन उसके अंदर आपने सी टैग लिया. सो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग्स. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर रखना कि अगर एंड ओपन कंटेनर टैग है सो ओपन के साथ आप उसे क्लोज भी कर रहे हो. ठीक है, नाउ लेट्स सी हेड टैग के अंदर आपने लिखा टाइटल टैग एंड टाइटल टैग के अंदर आपने डाला क्रिएटिंग अ वेब पेज. सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, यू आर नेस्टिंग द टैग्स. ओके, नाउ डिड यू नो HTML uses special bits of programming language called tags to let the browser know how a web page looks. Okay, should looks. The tags usually come in pairs. Okay, now let's understand some basic HTML tags. HTML document is made up of various tags, right? So which tell the browser how to display the web page, but there are some basic HTML tags used in all the HTML document to identify document parts. So the very first one tag is HTML tag. The HTML tag, here you can see this is a kind of container tag and closes the whole document, HTML document, which marks the beginning and the ending of the HTML document. It helps the browser to understand that the document as HTML document. ये जो tag HTML document की वजह से ही आपका जो document है वो as a HTML document क्या किया जा रहा है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है ब्राउजर के थ्रू. ओके, अदरवाइज वो उसे एज HTML डॉक्यूमेंट ट्रीट नहीं करेगा. हेड टैग, द हेड टैग, here you can see it is also a type of container tag, is used to define the document header. It is placed between the HTML tag and contains the information like title, style, document description, and etc. Title tag, the title tag appears within the head tag. The information enclosed by the title tag appears in the title bar of the browser window when the page is displayed. So बच्चों title bar कहाँ display होता है, ये वेब पेज के, जैसे क्रोम के टॉप पे आपने देखा होगा टाइटल बार आता है, तो वहां पे जो टाइटल शो हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस टाइटल टैग. ओके, नाउ बॉडी टैग, द बॉडी टैग
appears after the head tag. All the contents of the web page, that is text, graphics, links, etc., are enclosed in between the body tag. Okay, so is it clear to all of you? Now let's see creating HTML document. So to create HTML code using the text editor, Notepad, follow the given step. Click on start button. Okay, after that select window accessories, click on Notepad. So this is how you will open your Notepad in your system. Now type the HTML code, okay, in Notepad window. Here you can see this is the HTML code. You have to type this HTML code in your Notepad. After typing the code, save the HTML document, click on file and save as. The save as dialog box appears. Here you can see save as. After clicking on it, give a name to the document, but do not forget to add .html or .html. Okay, here you can see .html or .htm. This is the mandatory one extension because इसके बिना आपकी जो फाइल है वो HTML फाइल नहीं है. Okay, and you can't see in your browser how it will look like. So यहाँ पे आप ध्यान से देखें, .html करके introduction .html करके आप save पे click कर दें. Now let's see how to view HTML file. Viewing HTML document. The saved HTML document can be viewed in a web browser like Microsoft Edge, Google Chrome, or Mozilla Firefox. To view the HTML document, follow the given step. First of all, you have to open the folder you have saved the HTML document, okay, and double click on the HTML document. पहले तो आपको उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे आपने folder save किया है. Always remember the place where you are saving your folder, okay, and now you have to double click on that HTML document. The HTML document will open as a web page in the web browser. So here you can see the content is visible in this browser. Okay, now let's move forward. Let's see viewing source code. So बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोड को लिख रहे होते हो तो कोड को लिखने के बाद आपको सोर्स कोड को भी देखने होता है, right? So suppose you want to judge the source code, how will you do that? To see the HTML code of a web page being currently displayed in the web browser, browser window, open Notepad and open the saved HTML document. Okay, after that use this window to make modification in your HTML document. After making the changes, click on the save button in the file menu to the modification, and after modification refresh the web page in the browser window. So बच्चों जो कोड आप देख रहे हो वेब पेज में अपने, उसी फाइल को आप खोलिए अपने नोटपैड में, नोटपैड खोलिए, सेम फाइल को खोलने के बाद आप उसमें चेंजेस कीजिए, एंड चेंजेस करने के बाद उसे सेव करके जो आपका ब्राउजर है उसे दोबारा रिलोड कीजिए, एंड यू विल सी द चेंजेस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. Okay, so this is how you are going to make changes to your notepad HTML source code, and you can see that change in your browser. Okay, then close Notepad window, open the browser again and press F5 key to refresh and view the changes made in the document. Okay, now let's understand body tag. The body tag contains the main code of the HTML document. By default, the web page is created on a plain white background using the text editor in black color. The attributes of the body tag are used to change the default setting. अब बच्चों देखिए बॉडी टैग हम सब जानते हैं क्या होता है, राइट? बॉडी टैग के अंदर आपका सारा बॉडी जो भी वेब पेज का कंटेंट है वो उसी के अंदर आता है. सो सपोज यू आर डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट कलर इन द बॉडी टैग, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द होल वेब पेज. गेटिंग? सो लेट्स चेंज द कलर, changing the background color. So to change the background color of the page, we use BG color attribute in the body tag. Okay, so format, here you can see the body tag. In the opening tag we define the attribute. हम opening tag में ही define करते हैं BG color. बच्चों पूरा background यहाँ पे देखिए कैसे attribute का नाम लिखा गया है and color name. Okay, so BG color is red, and after saving the file, here you can see the change. This is BG color red, and you can see the change. Okay, this is called the view of the HTML document, and you can see the changes here. Okay, you can also change the color of the text, okay, by using the attribute color white. Now adding picture to the background. Suppose you want to add the picture to the background. To add picture in the web page background, we can use background attribute in the body tag. So here you can see this is the background attribute and file name extension. Okay, file name extension means आपको उस फाइल का नाम देना है जिस फाइल को आप एज अ बैकग्राउंड
जिस इमेज को आप एज अ बैकग्राउंड देखना चाहते हो. सो वेयर फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन इज द नेम ऑफ द पिक्चर फाइल टू बी यूज विद कंप्लीट स्टोरेज लोकेशन. ओके, आपको बताना है कि वो इमेज आपके सिस्टम में कहाँ सेव है. फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड, ये सी ड्राइव में यूजर सुमित डेस्कटॉप सैंड फोल्डर अल्फाबेट html3.png. सो इस तरीके से क्या करा गया है, ये मतलब बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये लोकेशन बता रहे हैं कि हमारी इमेज कहाँ सेव है. एंड यू कैन सी आफ्टर सेविंग द डॉक्यूमेंट HTML document, you can see the changes here. Okay, now changing text color. To change the text color, how will you do this? To change the default text color from black to some other color, we can use the text attribute. Okay, so here you can see body, text and color name. So body text is equal to green. So यहाँ पे आपने क्या करा है, बेसिकली बच्चों ये यहाँ पे आप कलर लिखेंगे, एट्रीब्यूट का नाम कलर होता है. एंड आप देखेंगे आपका जो कलर है वो चेंज हो चुका है. ठीक है, now let's see the p tag, that is paragraph tag. The p tag is used to start a new paragraph. The text that we type between this tag, p tag is also container tag. Opening p tag and closing p tag is by default left aligned. We can change the alignment of a paragraph by my bad students, we can change the alignment of a paragraph by using the align attribute. Okay, for example, this is your opening p tag and you have also mentioned the attribute align. So alignment, you have to left, right or whatever you want, and where alignment can be left, right or center. For example, this one. Why we are only showing the opening tag? Because हम attribute को opening tag में तो दिखाते हैं, ठीक है. But अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कोड को, आपको इन कोड्स को खुद ही नोटपैड में लिखकर ट्राई आउट करना है, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देखना है. ठीक है, नाउ यू कैन सी लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. ओके, दिस इज हाउ द अलाइनमेंट वर्क्स. नाउ BR tag, that is break tag. So the break tag is known as line break tag. To simply end one line and jump to the next break tag, the BR tag shifts the text to a new line without inserting a black line in between. अब बच्चों देखिए, so break tag कहाँ यूज किया जाता है? Suppose you want this, you have a line, okay? आपके पास एक लाइन लिखी हुई है एंड आप चाहते हो जो दूसरी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आए. Okay, but there are some space left in that line, first line. So उस केस में आप break tag का यूज करेंगे so that जो आपकी एक लाइन है वो दूसरी लाइन में जंप कर जाए. Here you can see I'm a Rohan, I'm a student, break tag, I study in class 7. So यहाँ पे break tag लगाया गया है. क्या किया गया है बच्चों? break tag लगाया है. इस break tag की हेल्प से क्या होगा, जो इसके बाद का कंटेंट है I study in class 7, ये कहाँ पे दिखेगा? नेक्स्ट लाइन में शो होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू में. ठीक है, so now here Quizmania, what is the correct HTML tag for inserting a line break? So this is the line break tag. Now move forward and here we have understood all the tags mentioned in the chapter. Now let's see server. Server is a computer program that controls or supplies information to several computer connected in a network. Server आप ऐसा कह सकते हो, जो सर्वर है, सर्वर एक ऐसा बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम होता है जहां पे बच्चों सारे ही कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं जिससे, और सारे ही कंप्यूटर सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, हाइपरलिंक. हाइपरलिंक इज अ प्लेस, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट इज connected to another electronic document or to another part of the same document. अब हाइपरलिंक क्या होता है बच्चों? कई बार आपने देखा है, अगर आप गूगल यूज कर रहे होते हो तो आप एक लिंक पे क्लिक करते हो, दूसरे पेज पे चले जाते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंकिंग. Okay, which helps you to redirect to the another web page. And tag is a set of letters or symbols that are put before and after a piece of text or data in order to identify it or show that it to be treated in a particular way. Okay, tags जो होते हैं वो special meaning होते हैं, उनका special purpose होता है. So now let's see in a nutshell. A computer on the internet that store websites is called server. जो हम जितनी भी वेबसाइट्स बनाते हैं ये कहाँ स्टोर है? ये सारी वेब सर्वर पर स्टोर है. A collection of web pages makes a website. Okay, HTML is a language used for designing web pages. There are two kind of HTML editors.
the first one and second one. Okay, what you see is what you get editors and text editors, and what you see is what you get editor are GUI based editors. Okay, GUI based programs that let us create web pages without knowing the HTML code. Now text editor are programs that are used to create web page by writing the HTML code. टेक्स्ट एडिटर में हमें कोड को लिखना पड़ता है. टैग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टैग एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इनसाइड द ओपनिंग टैग टू कंट्रोल द टैग्स बिहेवियर. फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर and alignment and all. Okay, when we use tags within some other tags, that is called nesting of tags. For example, head tag के अंदर आपका title tag आता है. HTML document is made up of various tags which tell the browser how to display the web page. HTML tag encloses the whole document, HTML document, which marks the beginning and ending of the HTML document. Head tag is used to define the document header. The information enclosed by the title tag appears in the title bar of the browser window and when the page is displayed. अब बच्चों जो इन्फॉर्मेशन आपने टाइटल टैग में क्या करी है, एनक्लोज करी है, वही इन्फॉर्मेशन टाइटल बार में नजर आएगा. कहाँ? ब्राउजर के. Okay, all the contents of the web page are enclosed in between the body tag. The saved HTML document can be viewed in a web browser, and p tag is used to start a new paragraph, and break tag is also known as a line break tag. So students, that's all for this chapter. Okay, now what you have to do, you have to revise your chapter and do not forget to do the practical which we have learned in today's class. Okay, so ये आपको नोटपैड में लिखना है and save करके उस फाइल को आपने वेब ब्राउजर में खोल के देखिएगा how does it look like. Okay, so that's all for this chapter. Now try to solve this exercise, revise the chapter. I'm gonna meet you in the next class, okay, with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring, students. Bye bye, students.